Hello students, welcome for the video class of political science. Today before starting the lecture, one short story I would like to explain. How the man deals with the positive and negative things. And what kind of tendencies of the people live in our society. तो दो बच्चे रहते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा होता है आयु में और एक जो दूसरा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो दोनों खेलते खेलते हुए गांव के बाहर चले जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं रहता, और गांव के बाहर जाने के बाद एक बड़ा सा गड्ढा होता है। तो उस गड्ढे में वो छोटा लड़का गिर जाता है और उसको बचाने के लिए वहां पर कोई दूसरा रहता भी नहीं है, तो उसका दूसरा लड़का होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो दूसरा लड़का उस छोटे बच्चे को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता। वहां पे निकालने के लिए ना कोई रस्सी होती है, ना कोई सीढ़ी होती है, या फिर दूसरा कोई सामान भी नहीं रहता है। तो बच्चा इधर उधर देखने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो कोई दूसरा वहां पर नहीं रहता, इसलिए वो मदद मांगने के लिए दूर चला जाता है। तो छोटा बच्चा जो उस गड्ढे में गिरा होता है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक दो बार गिरता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, गिर जाता है, लेकिन अंत में वो किसी प्रकार उस गड्ढे से बाहर निकल आता है। तो इस कहानी का तात्पर्य यही है, या फिर कैसे आया, तो वो अपनी मेहनत से, अपनी सोच से ऊपर आया। लेकिन सबसे अहम बात, उस जगह पे उस छोटे बच्चे को बताने वाला कोई नहीं था कि बेटा तू बहुत ही छोटा है, गड्ढा बहुत नीचे है या फिर बहुत ही गहरा है, तू ऊपर नहीं आ सकता। ये बताने वाला वहां पर कोई नहीं था, इसलिए बच्चा आराम से अपनी मेहनत से, अपने सोच विचार से उस गड्ढे से बाहर आता है। यानी उसके मन के ऊपर नेगेटिविटी नहीं थी, उसको नेगेटिव करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर आ पाया। तो समाज में अनेक से लोग रहते हैं जो हमें पॉजिटिव बनाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन ये हमारे मन के ऊपर रहता है कि हमें पॉजिटिव बनना है या नेगेटिव बनना है। हमारा मन पॉजिटिव विचार से भरा है तो हम पॉजिटिव बनते हैं। हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले लोग अगर निगेटिव हैं, हम ज्यादा निगेटिव विचार करते हैं, तो हमारा मन भी निगेटिव हो जाएगा। सो इट्स लेफ्ट टू अस टू बीइंग अ पॉजिटिव और बीइंग अ नेगेटिव, दैट्स लेफ्ट टू अस। सो विद द सेम पॉजिटिविटी we'll start our class. In previous class we've seen introduction and meaning of the political science as a discipline, first unit, and today we'll see nature of political science. So nature in the sense, yes, before about the lesson unit I will tell my nature itself. Nature यानी वैशिष्ट या फिर गुण लक्षण जैसे कहते हैं। मेरा नेचर या फिर मेरा स्वभाव कैसा है, शांत हूं, कम बोलता हूं, या फिर ऐसे लोग कहते हैं ना, हाँ इस व्यक्ति को बहुत ही गुस्सा आता है, ये बहुत ही शांत है, हाँ इसका स्वभाव बहुत ही शाय है, मजाकिया टाइप का है, या एज लाइक सेम नेचर। सो man, Aristotle, who is considered as the father of political science, he has told about the society, about the human being. So man is a social animal. What do you mean by social animal? A person who live in a society, he complete his all kinds of needs in a society itself. Why we live together? To fulfill our needs and make ourselves safety, make ourselves safe by the other things. छोटे बच्चों को देख लो आप, अगर आप उसको अकेले को छोड़ते हो तो वो रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर नहीं फील करता। When he is alone,
he doesn't feel secure. When he is there in the people, when he is there in the society, he feels himself secure and safe. So fulfill the needs of person and make his life happy and comfortable, so the person or the human beings live in a society. Man can't live without society, society can't live without man. Both are interdependent. जैसे हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. So as like same, man is depend on the society and society is depend on the man. Man can't live without society. Only two people can live without society. एक तो वो शैतान होना चाहिए, या फिर शैतान या फिर जंगली जानवर होना चाहिए, या तो एक तो वो देवता होना चाहिए. और हम तो ह्यूमन बींग्स है, मानव है. हर चीज के लिए हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर. सो man can't live without society and society can't live without man. Now, being as a social animal, man is called as a political. He has his own political life also. So how he deals with in his political life? So when man comes in a society, man's nature it is, or human being's nature it is, sometimes he is going to be a selfish, he is going to be a egoistic, and even he is sometimes quarrelistic. Selfish, खुद के बारे में सोचना. ईगो, अहम, मैं जो सोचता हूं वही सही है, जो मैं कहता हूं वही सही है. दैट इज इगोइस्टिक. खुद के बारे में या फिर खुद के विचारों को दूसरों के ऊपर लादना. और क्वारल्सम यानी बहस करना या फिर मार झगड़ करना, लड़ना झगड़ना. सो ये नेचर ह्यूमन बीइंग का है. When he goes in a political way, when he mix in a society, sometimes he is having a jealous, sometimes he is having a hatred. Jealous यानी द्वेष, द्वेष, hatred द्वेष है, किसी का द्वेष करना. सो इसके कारण क्या हो जाता है, अनार्ची पैदा होती है. सो द सोसाइटी बिकम्स एज anarchious, like survival will be fittest. So man in a society, being a happy life, completing his all the needs, sometimes he is having jealous, hatred, selfish, egoistic, quarrelsome. These all qualities are there in the man. To stop this all the things, to stop this anarchy, जिसका मन आए, जैसा आए वैसा, क्योंकि हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र है. Man has all the rights. So freedom is one of them, which is very important. If everyone start living as per their wish and will, is it possible to maintain law and order? Is it possible to lead the happy and satisfied life for everyone? No. Only the person who is the fittest, he can lead his life happily. But what about poor man who is very weak? So that person can't lead his life happily. So for that, society requires organization called state, and which functions through the agency of government. So the government, state, these things are required. When the society is there, man live in together, which forms a society. When number of the societies comes together, then it forms a state, and where is a state, then there the government will exist. Government is an agency of state. तो गवर्नमेंट जो है, तो ये गवर्नमेंट लॉ, ऑर्डर, पीस, या फिर जो सारे हालात है हमारे राज्य के, देश के, उन सारे हालातों के ऊपर निर्बंध लगाए रहता है या फिर नियंत्रण रखता है. विच कंट्रोल्स एंड मेंटेन्स पीस एंड ऑर्डर, as well as law and order also maintained by the government. So the government is very essential to keep the state happy and peaceful. Well maintained law and order. So for that, government is very important, which is going to be implement different kinds of laws and orders.
So this is the beginning part of. Now let's see few more points about. So just see here, Aristotle told man is a social animal. His needs are going to be complete only in the society. Then he can lead his happy and comfortable life. He can't live without society. But being a social animal, man is a political being also. Where he is having a selfish, egoistic and quarrelsome, jealous, hated policy. So for this all, state is going to be exist. State is one of our organization, which agency is a government. Now, from the ancient time, how we study about the history, as like same way, political science is a very ancient subject matter. It is not just recent one, as like history from lakhs and lakhs year back we are studying. As like same way, political science also is very ancient one, which is going to be deals with a number of the things. Now we are living in the 21st century now, but political science was going to be followed from the ancient time. So earlier in 20th century, century, 20th century, where man was to live, but he was not having any kind of rights to get participation in the administration, to get participation in the political activities. So then who used to lead? Yeah, earlier where the monarchy was there, in that monarchy, king, queen, his relatives, they used to take all kinds of decisions. King, queen, relatives, these all the peoples, even number of the peoples were there who used to take advantage of that. All the emperors there, hierocrats were there, theocrats were there, seats were there. So mostly these all the peoples who used to take decision about the political administration and all the things. But as the political science subject went on changing, the dimension of had went on changing, the people getting participation into the administration, political things and all the matters. But this was happened when the principle of democracy has developed. Principle of democracy. Then students, can you tell me what is exactly democracy? Yes, democracy is nothing but, especially a well-known person, Abraham Lincoln, has given a definition. प्रजाप्रभुत्व, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. तो इस लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही अच्छी और आसान डेफिनेशन दी है. द गवर्नमेंट विच इज रन बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. द गवर्नमेंट विच रन बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. जो तंत्र, लोकतंत्र, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाई गई तंत्र है, तो उसको लोकतंत्र कहते हैं, प्रजाप्रभुत्व कहते हैं कन्नड़ा में. सो दैट इज डेमोक्रेसी. सो व्हेन दिस डेमोक्रेसी, the principle of democracy has well developed, then the people started taking participation in the all the matters of administration, political activities, law and order. Everywhere man started taking participation actively. Then it has been divided, where earlier king and queens were
हेड। पहले के जमाने में बस राजा रानियां ये सारे हेड हुआ करते थे। उसके बाद जो लोग होते हैं, सिंपल लोग, वो भी इनमें पार्टिसिपेट होना शुरू किया और उन्होंने अपनी सारी भागदौड़ समझाई। तो इसके बारे में मैक्स वेबर ने एक बात कही है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली दैट? मैक्स वेबर, पॉलिटिकल साइंस हैज acquired Max Weber, a well-known politician, political science acquired distinct position in social science. Distinct position, इससे पहले there was no distinct position for the political science in social science. So yesterday we seen social science, which includes history, geography, civics, psychology, ethics, as well as political science also. So distinct means very special position which got in a social science, and it has been told by the Max Weber, because as a later on, even recent now, the people started taking participation in the administration, law and order, and other activities of the human beings. So it is got the distinct position everywhere. So students, this is exactly what we see the nature of political science. So to remember the points, man is a social animal. His needs and all the things completes in a society. He lives happily and comfortably in the society, but being as a political human being, he has a selfishness, ego, jealous, hatred. So sometimes he also quarrels. So for this, all the things, to maintain law and order, to maintain peace and make every person's life happy, state, one of a political organization came into the exist, and government is agency of state. So the government runs all these things. Then earlier in the ancient time, the whole administration, political activities were in the hands of king, queens, autocrats, seers in their hands. But because of the principle of democracy which has been developed, number of different dimensions of the democracy has developed, so man started taking participation in the activities, political activities, and finally the political science acquired distinct position in the social science as told by the Max Weber. So this is about the nature of political science. If you have any doubt, you can ask me later, or you can message me. I will see those and clarify your doubts. Now, another part of this lesson is that whether the political science is a science or art. So on what basis we will see that? So let's see whether the political science is a science or not. Now I have told about what is science. So science is a systematic study of subject. Then what is political science? So political science starts and ends with the state, government and political activities of the human being. So political science as a science is political science, a science question mark.
तो हमें ये प्रूव करना है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है या नहीं है। तो उससे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे दो ग्रुप है, कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का ग्रुप है जो पॉलिटिकल साइंस को साइंस समझते हैं, और दूसरा जो ग्रुप है वो पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं समझते। सो विच पॉलिटिकल थिंकर्स आर देयर हु थिंक पॉलिटिकल साइंस इज अ नॉट साइंस, एंड वन ऑफ अ ग्रुप विच थिंक्स पॉलिटिकल साइंस इज अ group of subject of the science. So let's see first one, the political thinkers group, which tells that political science is a not science. Political science is not science. नॉट साइंस। स्टूडेंट्स, पहले इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं समझते और क्यों। तो उन लोगों में, हाँ स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन में आस्क फॉर 1 or 2 marks. Name the persons or the political thinkers who say that political science is not science. So among them, J.S. Mill is there. J.S. Mill. Buckley is there. Buckley is there. Then again, few thinkers are there. Auguste Comte is there and Charles is there. Auguste Comte and Charles. Now these political thinkers, J.S. Mill, Buckley, Auguste Comte and Charles, these people, these political thinkers says that political science is not science. Then why they say that political science is a not science? Then what are the characteristics or what are the things they have told? Why and how they have proved it's not a science? So students, the question may ask for the 5 mark. Explain whether the political science is science or not. Then the following points to be mentioned and to be written well. So first point, study of subject matter. Study of subject matter. Method. Subject matter, methods and generalization. Methods and generalization. For example, take physics, which is a branch of science. So physics में हम क्या क्या पढ़ते हैं? वहाँ पे चुंबकीय तत्व पढ़ते, विद्युत के बारे में पढ़ते, मास के बारे में पढ़ते, गति है, वजन है, इन चीजों के बारे में पढ़ते। यानी वहां पे मैटर फिक्स है, क्या स्टडी करना है वहां पे फिक्स है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो लोग नहीं कहते, ये साइंस नहीं कहते, उनका कहना है कि इसका जो स्टडी मैटर है वो फिक्स नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ स्टडी मैटर और द सब्जेक्ट मैटर and methods and generalization. So this is the first point, lack of study of subject matter, methods and generalization. So there is no definite subject matter to study in political science, so it's not a science. Second point, which is a lack of universal accepted definitions. Lack of universally accepted definitions. Now the definitions, because political science deals with the human beings. और जैसे कहते हैं ना, मान लो
जहाँ पे फिजिक्स की डेफिनेशन रहती है, हाँ, हर एक चीज की एक डेफिनेशन रहती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम यहाँ पे एक डेफिनेशन नहीं दे सकते, पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे सकते, या फिर मेरी डेफिनेशन अलग हो सकती है, आपकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। जैसे मान लो आप डेमोक्रेसी के बारे में कहा, कम्युनलिज्म के बारे में कहा, सोशलिज्म के बारे में हमने अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार हो सकते हैं। मेरी राय अलग होगी, आपकी राय अलग होगी, बाकी लोगों की राय अलग होगी। सो देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन इन अ पॉलिटिकल साइंस. It may be related about humanism, socialism, communalism, democracy, or other definitions or other things. So there is no clear definition. So it is a lack of universally accepted definitions, because political science deals with the human beings. So J.S. Mill, Buckley, Auguste Comte, they tell that the subject matter is not belongs to a science branch. Now third point, which is going to be deals with the things lack of science methods. Third point is lack of science methods and experiments. Now in science, students, you might have done some of the experiment in 10th in your SSLC. So there are the few steps or certain steps. First you have to collect the equipment, then you have to see that observation, then experiment, then finally you are going to give the conclusion. But here in political science there is no any kind of method or there are no experiments. क्या ऐसा मुमकिन है लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, या कम्युनलिज्म के बारे में एक्सपेरिमेंट किया जाए, या फिर सोशलिज्म के बारे में एक्सपेरिमेंट किया जाए? नो, देयर आर नो एनी काइंड ऑफ मेथड्स एंड नो एक्सपेरिमेंट. सो द पॉलिटिकल साइंस इज अ नॉट ब्रांच ऑफ साइंस. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, अभी 2 पॉइंट्स है. सो विच आर दोज? Why this science, political science, is not science? Exact predictions. 4th point, exact prediction. Prediction, it is nothing but what happens, or as like telling about the these things will happen. जैसे मान लो पानी, H2O, which is called as, so 2 molecule of the hydrogen and 1 molecule of the oxygen, when it is going to be mixed, then it will be form a water. So ऐसे बता सकते हैं हम political science में कि exactly क्या होगा? No, there is no exact prediction in political science because subject deals with the human beings. So there is no exact definition and prediction in political science. And the 5th point is unable to give the conclusion. Unable to give conclusion and definite and precise conclusion. Definite and precise conclusion. यस, यहाँ पे कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जो अंत में हमें मिलता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद. हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर ये करने के बाद ये हुआ. सो ऐसे कंक्लूजन, जैसे
हाइड्रोजन के 2 मोलेकुल और ऑक्सीजन का 1 मोलेकुल डालने के बाद हमें अंत में पानी मिला या फिर पानी की बूंद मिली। ये जो कंक्लूजन होता है, हाँ, whether the experiment is right or wrong, got successful or failure, but we will give conclusion. So these kind of conclusions are not possible in a political science, so it's not called as a science. So these points tells us that science is a not science, or political science is a not science, and it has been proved by J.S. Mill, Buckley, Auguste Comte, and Charles. So these political thinkers tells that political science is not science because of these 5 points. Thank you, students.